Hello guys, welcome back to Knowledge Board. ଆମେ previous ଥର ୟୁନିୟନ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଜି ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାର କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଟା କରିବା। ୟା ଆଗରୁ ଲୁସେଣ୍ଟ ର ସିରିଜ ଗୁଡାକ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୋର୍ସନ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଇଜ ଅଲରେଡି ଆଭେଲେବଲ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିର ପୋର୍ସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲମୋଷ୍ଟ 10 to 12 ଭିଡିଓସ୍ ବି ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲାଣି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଓଭର ଦେୟାର। Now ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା without any delay because ଏତେ long gap ପରେ I have already started this polity session। ଆଉ ଏଇଟାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚलो ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। फर्स्ट क्वेश्चन टा देखिए हु इज कम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा किए किए राज्यसभा को डिसॉल्व करि परिबे राज्यसभा टा केबे डिसॉल्व हुएनी ओके तो नन आंसर विल बी नन राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन द लोकसभा इन द केस ऑफ को केस रे हमर सिटिंग ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस केस रे हमर राज्यसभा टा बेसी पावरफुल ओके द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा केते राज्यसभा रा टेन्योर टा সেটা হচ্ছে permanent body right what is the term of a member of the Rajya Sabha member the term টা কেতে 6 বছর the vice president is the ex officio chairman of the vice president টা মানে কাহার ex officio chairperson সে হচ্ছে আমরা রাজ্য সভার now sixth number question টা কোন ଦେଇଛି the Rajya Sabha is dissolved after କେବେ dissolve ହୁଏ এটা ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଟା dissolve କେବେ ହିଁ ହୁଏନି the then none seventh number ଦେଇଛି the upper house of Indian parliament is known as upper house Indian parliament ର upper house କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟ ସଭା and lower house is the Lok Sabha the who is the chairman of Rajya Sabha ରାଜ୍ୟ ସଭାର chairman ଆମର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର vice president ତାପରେ ଦେଇଛି which is the house where the chairperson is not the member of that house ସେଟା କିଏ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାର how many members are nominated by the president in the ରାଜ୍ୟ ସଭା କେତେ ଜଣ member 12 ଜଣ according to our constitution the Rajya Sabha kona is not subject to dissolve जोटा कि हमें already discussed the quorum of Rajya Sabha is Rajya Sabha रा quorum किते 1/10 of the total members सेटाକୁ कौन कौन the quorum of Rajya Sabha that is resolution for the removal of the vice president of India can be proposed by proposed in सेटा कौन हबो आंसर any house of parliament कौन the resolution of the removal of vice president को remove करिया पे कोठी सेटा हमर प्रपोज करा जिवो को भी माने हाउस रे या द अपर हाउस या द लोअर हाउस कोठी भी हमें सेटा को हम प्रपोज करि परिबा वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल पे नाउ 14 नंबर क्वेश्चन लीजिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिडेड ओवर बाय वन who is not its member से कि हमारा राज्य सभा Rajya Sabha can delay the finance bill sent for its consideration by the Lok Sabha for a maximum period of केते period ପାଇଁ 14 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସେ ରଖି ପାରିବେ ନାହିଁ now what could be the maximum time limit of the 0 hour ର maximum time limit होची 1 hour now question number 17 ରେ कोन ଦେଇଛି which one of the following cannot be dissolved but can be absolute which one of the following cannot be dissolved but can be abolished सेटा के होबो हमरो सेटा होची none कोटा माने आ भितर कोटा भी नुहे okay which one of the following states has be the lowest number of elected members in the Rajya Sabha कोठी अछि हमरो हम सबटु कम हमरो हिमाचल प्रदेश रे consider the following statements with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha and select the correct answer from the quotes given below सेटा कोन देछि हमरा आंसर टा देछि should be at least 30 years of age okay this is right
should be registered as a voter on the list of voters in the states from which the candidates is to be elected. এইটা କିଛି ତାର ମାନେ qualification ରେ ସେଟା ଆସୁନି। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି should not hold office of profit under the state। ଏଇଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି ତ answer will be B। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି what is the fixed strength of the राज्यसभा। राज्यसभाର fixed strength କେତେ ଆମର 250। ହଁ ତାପରେ question ରେ କଣ ଦେଇଛି how is the राज्यसभा dissolved। राज्यसभाଟା ଆମର dissolve କେମିତି ହୁଏ ଆମର ୟା ଭିତରୁ କୌଣସିଟା ବି ନୁହେଁ। राज्यसभाଟା dissolve ହିଁ ହୁଏନି ଏଟା କେମିତି ହବ in which house of the parliament the president officer is not a member of the house। ସେଟା ଆମର କୋଉଠି ହବ राज्यसभाରେ। Which one of the following special powers has been considered on the Rajya Sabha by the Constitution of India? ସେଟା କଣ ହବ ଆମର question number 23 ର to pass is a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and create one or more all India service। এই କେସ୍ ରେ ଆମର କଣ ହବ ରାଜ୍ୟ ସଭାଟା ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି regarding ଆମର all India services state list parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services। ये केस रे ताको कौन स्पेशल पावर दिया जायछि। The question number 24 कौन दीजिए राज्यसभा has equal powers with लोकसभा। को केस रे हमर equal power ना amending the constitution constitution को amendment करबा टाइम रे ताको equal power दिया जायछि। वर्तमान हमें राज्यसभा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर देले। नाउ लेट्स गो टू द लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल भी ताको कुहा जाए। Which are the two states other than UP having the highest representation in Lok Sabha? ଆମର ଲୋକସଭାର ହାଇଏଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାର ୟୁପି ରେ ଦେନ୍ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର and then ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ। answer will be A। the first mid term election for Lok Sabha was held in କେବେ ହେଇଥିଲା 1971 ରେ ହେଇଥିଲା first mid term election। okay the speaker's vote in the Lok Sabha is called speaker's vote को हमें कौन कहती casting vote भी कहती है ना। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇ ଯାଇଥାଏ ମାନେ ସପୋଜ 50-50 ଆସି ଯାଇଥାଏ ଭୋଟ ସେତେବେଳେ ସ୍ପିକରଙ୍କର ଭୋଟଟା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ହେଇଯାଏ and ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ କାଷ୍ଟିଂ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଡିସାଇଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ that is called casting vote। ତାପରେ question number 4 କଣ ଦେଇଛି as per the constitution of India how many members are represented by the union territories in the Lok Sabha। ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି କେତେ 20 ଟା ଆମର members थांती are represented by the union territories in the maximum ही परिवो ताटू कम हेले चलियो बट ताटू अधिक हे परिबे नाही। the maximum strength of the Lok Sabha as stipulated in the constitution of India is maximum strength केते 552। okay the member of Anglo Indian who can be nominated by the president to the Lok Sabha केते जण हे परुथिले सेटा होजंदी हमर दुई जण। the union budget is always presented first in केबे union budget ता first कोड present करा जाय लोक सभा रे। okay now question number 8 in the Lok Sabha unless there is a quorum the speaker should not conduct the proceedings to ensure this कोनटा सेटा ensure कर परिबेनी should not conduct the proceedings केमती to ensure this कोन the parliamentary secretariat keeps a watch on the attendance in the house and inform the speaker ହେଲା सेटा हमें the council of ministers of Indian union is collectively responsible काहाको responsible समाने हेटा होजन responsible to Lok Sabha। which of the following states elect only one member of the Lok Sabha କାହାର ଗୋଟେ ହିଁ member ଅଛନ୍ତି लोक सभा रे सेटा होजन सिक्किम रो। the allocation of seats in the present Lok Sabha is based on which one of the following census को 1971 अनुसार ही हमरो allocation हिची seat allocation हिची को state रो केते representation दरकार हमको। ओके तापर कोन दिछि 12 नंबर which consider the following statement कोन दिछि कोटा ठीक की भूल हम देखियो दीटा स्टेटमेंट दिछि the total elective members of the Lok Sabha is distributed among the states on the basis of the population and area of the state। yes this is right
Now, question answer number 2 रे कौन देखते the 84th Amendment Act of the Constitution of the lifted the fringe of the delimitation of the Constitution imposed by the केबे हितला 42nd Amendment. Then answer will be both 1 and 2 is right. Who holds the power of the nominee for Anglo-Indian community in the Lok Sabha? से किए करंती ना President of India. Question number 14. What is the maximum age laid down by the candidate to seek election to the Lok Sabha? कितने हितवा दरकार age 25. Now, who is not entitled to take part in the activities of Lok Sabha? किए सेटा participate कर परिबे नहीं. He is not entitled. एमान को भितरु कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो करि परिबे, अटॉर्नी जनरल करि परिबे, सॉलिसिटर जनरल करि परिबे, कि करि परिबे नहीं. The Secretary of President of India करि परिबे नहीं. Okay. The state-wise allocation of state seats in Lok Sabha is based on the 1971 census. Up to which year does this remains enact? So the state-wise allocation of the seats in the Lok Sabha is based on the 1971 census. हिसाब से सेटा हेल्ची. Okay. Allocation कराई up to which year does it remains केते वर्ष जाय सेटा रहइबो ना 2026 जाय रहइबो. 1971 आमे वर्तमान हमरो जते भी लोकसभा सीट अछि सब 1971 सेंसस हिसाब रे ही डिसाइड अछि केते अप टू हमरो 2026 जाय. द क्वोरम ऑफ लोकसभा रा क्वोरम टा केते हमरो आमे पढिचंती 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स. 18 number question दीजिए. The 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken for after the year. हमरे तो आगुर पढ़ी थिले जोड़ा 2026 रे 84th Amendment रे हमर कोन हितला डिसाइड करा हेतला कि कोन हैज फ्रोजन द टोटल फ्रोज करा हेतला 1971 पर्यंत जति के भी सेंसस हेतला ता भीतरे जति के भी पॉपुलेशन थिला सेही हिसाब रे डिसाइड हेतला फ्रीज करा हेतला until केते 2026 पर्यंत. Now 19 number question is which one of the following states has the highest number of reserve seats for the scheduled tribes in the Lok Sabha? कोटी highest number ता केबे अछि कोटी अछि scheduled tribe ना हमर के अछि मध्य प्रदेश रे. Okay, reserve seat अछि. Now 20 number question is Rajya Sabha can delay the finance bill sent for its consideration by the Lok Sabha for a maximum period of केते दिन पर्यंत maximum period of सेटा होल्ड करि परबो 14 दिन पर्यंत ताठो अधिक से गोटे फाइनेंस बिल माने को होल्ड करि परबो नाही. Okay. Now, to be officially recognized by the Speaker of the Lok Sabha as an opposition group, a party or coalition of parties must have at least केते 50 जन मेंबर होइतबा दरकार. ओके. Now 22 number question कौन दीची 22 number question the state of Uttar Pradesh accounts for केतरा सीट अछि तार 80 लोकसभा सीट अछि. Who could be the maximum limit time limit for of 0 hour in the Lok Sabha? केते maximum time limit 0 hour रो गोटे घंटा. Out of 543 Lok Sabha constitutions, how many Lok Sabha constitutions are from the states? State टा केते हमरो 530 टा. Okay. तापर the first female speaker of the Lok Sabha किए first female speaker किए मीरा कुमारी. The speaker of the Lok Sabha addressed his letter of resignation to the काहाका resignation से दियंती the deputy speaker को ही से देई परिबे. Okay. तापर the speaker of the Lok Sabha can be removed by केमती तांको remove करा जाई परिबो. Question number 27 तांको remove करा जाई परिबो. The resolution of the Lok Sabha passed by a majority of the member of the house. Resolution गोटे pass करा जाइबो maximum majority सतरा यदि vote देबे सेन तांको remove भी करा जाई परिबो. Okay. Now 28 देछि a number of Lok Sabha members who can table a no confidence motion against the council of members is केते 50 जन. Okay. According to the article 82 of the Constitution of India, all allocation of the seats in the Lok Sabha
to the states is on the basis of dash census. हम पढ़ुचंदी 1971 एटा without any ऑप्शन देखि कि हमें डिसाइड कर कहि दे परबो. What is the fixed number of members of the Lok Sabha? केतरा फिक्स अछि हमर होछि 545 टा. फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंस बिल टा केमति प्रेजेंट कोड प्रेजेंट करा जाय हमर लोअर हाउस रे एटा प्रेजेंट करा जाय. तापर देजी 32 the opposition party status is according to a political party in the Lok Sabha only if it captured at least सेटा केते 10% सीट रहितबा दरकार तेनको ताको ही सेतबेले को आज बहि होचते ऑपोजिशन पार्टी दा स्टेटस से पाई परिबे. ओके जेतरा भी सीट रहिला तार 10% सीट ता से मिनिमम 10% सीट से एक्वायर करथिबा दरकार. द टोटल नंबर ऑफ लोक सभा सीट केते रहि अछि हम टोटल टा 543. तापर दीजिए द टर्म ऑफ लोकसभा रा टर्म केमती होबो कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. ओके तापर कोन दीजिए 35 रे which one of the following constitutional amendments are related to raise the number of members of Lok Sabha to be elected from the state. सेटा क्या बिकेबे केमती 7th and 31st. देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स है ना. लोकसभा रा मेंबर को बढ़ी परिबो कोथरे हमरो लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट सेटा होचे हमरा आर्टिकल 7th and 31st रे. से हिसाब रे हमरा डिसाइड होबो ना पॉपुलेशन हिसाब रे which one of the following is the largest area wise Lok Sabha constitution. area wise कोटा हमरो largest Lok Sabha constituency सेटा होचे हमरो लद्दाख. वर्तमान आमे लोक सभा एंड राज्य सभा टा कंप्लीट कर देले आ वीडियो टा को बेसी लेंदी न करी कि नेक्स्ट आर जो रहिला ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट हमर लोक सभा स्पीकर आ राज्य सभा रो हमर जो चेयरमैन रहले तांको विषय रे हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा. किछि डिस्कशन कर दबा देन क्वेश्चन आंसर करिबा सो दैट क्वेश्चन आंसर करिबो इजी हबो. आ हमें किछि ओटे थ्योरी पार्ट रे हमें फर्स्ट किछि हल्का फुल्का एलाबोरेशन कंप्लीटली मु बुझाउ चाहूनी हमें केमति क्वेश्चन आंसर इजी हबो करिया पे सेटा ही करिया ट्राई करू छी. सो होपफुली ये क्वेश्चन आंसर उडा को बहुत ही हेल्पफुल हबो आ वीडियो भी पसंद आसीथिबो. जदि वीडियो भल लगी छि देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट हमर नेक्स्ट जते भी वीडियोस आसीबो सेटार नोटिफिकेशन इंस्टेंटली पाई जे परिबे. जदि वीडियो भल लगी देन हिट द लाइक बटन आल्सो. थैंक यू फॉर वाचिंग.